Okay, guys. So, Assalamu alaikum. This is Shafat Khan. We are doing NUMS past papers, and this is from a 2017. Okay, so let's start. An object is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meters per second. How much time will it take to reach the highest point? If you have this object right over here, you throw it upwards, and its initial velocity is 20 meters per second. We need the time by which it can reach the maximum height. ठीक है तो अब टाइम पूछा है आपसे। टाइम कितना लगेगा? ठीक है, यू नो द एक्सेलरेशन एज वेल, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्पीड इसकी कम होगी, तो एक्सेलरेशन माइनस में होगी 9.81। क्यों? क्योंकि ये बॉल की स्पीड को कम कर रही है। दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज एक्चुअली डीसेलरेशन। ठीक है, यू हैव द इनिशियल वेलोसिटी, you've got the final velocity as well. Q, because at the maximum height, the final velocity is going to be zero. The best formula you can use is the formula of definition of acceleration, which is v minus u over t. ठीक है, तो t की वैल्यू निकालने के लिए v minus u over a हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 अपॉन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 9.81। आंसर आपका तकरीबन तकरीबन, अगर हम g को 10 ही अज्यूम करें, 10, तो आंसर आपका तकरीबन 2 आ रहा है। ठीक है, 2 के करीब आएगा ना, क्योंकि 10 के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस माइनस का साइन तो ऐसे कैंसिल हो गया। तो बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था काइनेमैटिक्स के चैप्टर से। काइनेमैटिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, एएस के फिजिक्स में भी आता है। लेट्स मूव ऑन। सपोज यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रूफ ऑफ योर हाउस। इट टेक्स 2 seconds टू रीच द ग्राउंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ योर हाउस? अच्छा, अब ये ऑपोजिट क्वेश्चन है। अब ऊपर से नीचे की तरफ आपको फेंका जा रहा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आपके घर की छत से, एंड आपसे हाइट पूछी जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी इसमें अब आपकी जीरो होगी, क्योंकि इट्स जस्ट बीइंग ड्रॉप्ड, राइट? इसको थ्रो नहीं किया जा रहा, इट्स नॉट थ्रोन, इट्स जस्ट ड्रॉप। तो अब दे आर आस्किंग यू व्हाट्स द हाइट ऑफ योर हाउस, बट यू स्टिल नो दैट द एक्सेलरेशन इज स्टिल 9.81, ओके, एंड द टाइम इज रिक्वायर्ड। इसके जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि वी नो द इनिशियल वेलोसिटी, वी नो द एक्सेलरेशन, एंड we don't know the wait, time is not required. We do have the time of 2 seconds, and all we need to know is the height. So for that, we are going to use, so the distance is required in Baki size is a dv. The formula that we can use is S is equals to ut plus half at squared. Okay, because this is the formula in which you have the initial velocity, time, and acceleration, and S is required. So u तो इसका वैसे ही जीरो है, राइट? तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर आपको यूज करना है। जी की वैल्यू को अगर हम 10 ही ले लें, ठीक है, और टाइम की वैल्यू को 2 का स्क्वायर ले लें, तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 20 मीटर्स आ गया। ठीक है, अब ये आंसर आपका एग्जैक्ट आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 20 मीटर्स ही आपका आंसर हमेशा हो। यूजुअली एग्जामिनर जो है ना, वो एग्जैक्ट 9.81 एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.81 यूज करके फिर सॉल्व करते हैं ये। तो अगर वो 9.81 यूज करके कर रहे हैं ना, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि ये आंसर आपका थोड़ा सा 20 मीटर्स से छोटा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ यंग मॉड्यूलस आर। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? यंग मॉड्यूलस कहते हैं y इज इक्वल टू ई ए ओवर एल इक्वल्स के होता है, या फिर यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो ई इज इक्वल्स टू ई, यंग मॉड्यूलस का नाम है, ठीक है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है ना, इनको फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिख लें ऊपर। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, नहीं, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी, मैं आगे निकल गया। फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एफ अपॉन ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है एक्सटेंशन अपॉन लेंथ। ठीक है, तो एक्सटेंशन को हम स्मॉल ई कह देते हैं अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब एक्सटेंशन अपॉन लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मतलब कोई यूनिट्स नहीं होते, क्योंकि एक्सटेंशन भी मीटर्स में है और लेंथ भी मीटर्स में है। तो क्योंकि ये दोनों मीटर्स में है, तो इनको आउट कर देते हैं, इनके यूनिट्स नहीं है, सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया की यूनिट्स है। फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स को आप फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, राइट?
डिवाइडेड बाय एरिया। अब मास होता है केजी, ठीक है, इसके यूनिट। तो अगर डायमेंशन में लिखना है तो मास को कैपिटल एम कह सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन अगेन पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा। मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ms-2, और एरिया का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब सिर्फ यूनिट्स के फॉर्म में यहाँ लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा के जी, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा ms-2 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऊपर बस एम ए, क्योंकि फोर्स एम ए के इक्वल होता है ना, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। मैंने सिर्फ इस ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पर लिखा है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले पार्ट के कोई यूनिट्स नहीं है। अब ये मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जो बचेगा उसी को आप डायमेंशन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो ये मीटर गया, मीटर स्क्वायर यहाँ से गया, तो ये हुआ आपके पास के जी m-1, क्योंकि नीचे से मीटर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, s-2। तो इसके डायमेंशन हो गए के जी, जो कि मास है, तो मास का डायमेंशन होता है m, मीटर्स जो कि लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन होता है l, लेकिन -1 हो जाएगा क्योंकि इसकी यूनिट है। और देन सेकंड से सेकंड्स, जो कि टाइम है, टाइम का यूनिट होता है कैपिटल टी, और t⁻², ठीक है। तो ये m l−1 t⁻²। सो ये ऑप्शन सी आपका बेस्ट आंसर आ गई। इन्होंने ये पावर्स गलत लगा लिए, नीचे की जगह ऊपर होनी चाहिए, लेकिन ये आपके डायमेंशंस बन गए, m l⁻⁻1 t⁻²। ये डायमेंशंस जो है आपके यंग मॉड्यूलस के डायमेंशन, ठीक है। चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, ये आ चुका है 2-3 बार। Then next question is the length of the and the width of the rectangular plate are measured to be 15.3 millimeters and 12.5 millimeters, 50 actually. Find the area of the plate up to appropriate number of significant figures. अच्छा, ये 15.3 mm है और ये 12.50 mm है, ठीक है। अब एरिया निकालना है फॉर रेक्टेंगल, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15.3 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मैं मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर अगर आप करें तो 5 3 15 आ जाएगा, 5 5 25, 26 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 2 5 10, 1 2 एंड 3 हो गया, 1 3 3, 1 5 5, 1 1 1। ये आंसर आ गया आपके पास। 191.25 आ रहा है। अब आई थिंक आंसर ऑप्शंस में थोड़े से मैचिंग का डिफरेंस है, देख लेते हैं। Okay, guys, so now in this question, we didn't actually have to solve this entirely. All we needed to see was the number of significant figures. Okay, now we're going to compare the two values, and the one that has fewer significant figures, our answer should be in the one that has a fewer significant figures. Okay, so in this case, both of them have exactly the same. No, actually, this has 4 significant figures because the 0 that comes after the decimal is significant, and over here we've got 3 significant figures, 3SF. So the fewer significant figures would be the answer. Okay, they have to be in the answer. So the 3 significant figures, the only answer that has 3 significant figures is 196, and it's closer to 191 as well. It's close to 191, I mean. So yeah, 196 is going to be the best answer because it depends, it has the same number of significant figures, ठीक है। जिसके कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वही आपका आंसर, आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर्स भी उतने होने चाहिए, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस पर ये आंसर है। डी में आपके पास 3 नहीं है, डी में यू ओनली हैव 1 significant figure, that is 2. The 2 zeros are not significant. Similarly, over here we've got 4 significant figures, and over here we've got 5 significant figures. It's option C. Then alternate units to kgms-1. What is kgms-1? Okay, kgms-2 किसका यूनिट होता है भाई? kgms-2 फोर्स का यूनिट होता है, न्यूटन का होता है।
न्यूटन इज के जी एम एस माइनस टू, के जी एम एस माइनस टू न्यूटन होता है। इसी को अगर हम सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें तो के जी एम एस माइनस वन आ जाएगा। सो यू आर मल्टीप्लाइंग इट विथ टाइम, विथ सेकंड्स, राइट? सो इट्स न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, ये न्यूटन है, ये पूरी चीज न्यूटन है, और ये सेकंड है, तो न्यूटन सेकंड आपका आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, force 0.12 Newton is applied on a spring and the spring elongates by 3 centimeter. This is the extension that is given to us and the force that is given to us. The specific constant of the spring is, okay, so they're just asking for the spring constant. Hooke's law याद है सबको? Hooke's law apply करना है यहाँ पर. Although they have not given us any details about the limit of proportionality, but that doesn't really make a difference because हम बस यही data जो given है उसके मुताबिक solve करेंगे. Force is proportional to extension is the formula. So force is equals to F is equals to KE. So K is equals to F over E. ये formula था. ठीक है, so K is equals to 0.12 divided by 3. This is in centimeters, so centi has to be converted into meters. So into 10 to the power of minus 2. आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 0.12 को आप 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस टू भी तो लिख सकते हैं, राइट? और ये 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस टू, सो माइनस टू कैंसिल और 3 4 12 हो गया, तो आंसर आ गया 4 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया 4 न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर, सो 4 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, then next, a vector in space has dash dimensions. Vectors in space has, actually vector में 3 dimensions होता है, ठीक है, कौन कौन से? x dimension, y dimension और z dimension। अब कौन कौन सा यूनिट वेक्टर्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं? i, j और k। ठीक है, then a body will be in a translational equilibrium if the vector sum of all forces acting on it is 0। ठीक है, वेक्टर सम अगर सारी फोर्सेस का 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि ये एक बॉडी है, वो राइट साइड पे जा रही है या लेफ्ट साइड पे आ रही है, ये फोर्स 10 न्यूटन है, ये फोर्स भी 10 न्यूटन है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये माइनस है, अगर इनको सम करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 10 के साथ आप ऐड करेंगे -10, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0। सही है, नेक्स्ट, इन रोटेटरी मोशन एंगुलर मोमेंटम plays a role which is analogous to that played by dash in linear momentum. So angular momentum आपका किस चीज का रोल प्ले करता है? एंगुलर मोमेंटम अगर आपके पास एंगुलर मोशन में है तो लिनियर मोमेंटम आपका लिनियर मोशन में होगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, if the spacing between the slits is doubled and the linear distance between the screen is reduced to one half, then the spacing between the two edges and bright fringes will be dash of the actual value. Now, this is a very important question. In fact, a question that has been very frequently repeated as well. So let's just look at this in a bit more detail. Okay. So please pay your undivided attention over here now. ये क्या बात है? I did this become so thick. Okay. Now, this is the screen on which you are recording the fringes. Okay. And this is the double slit. These are the double slits over here. अब क्या होगा? यहाँ से आपकी वेव आई, ठीक है। अब ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक डिस्टेंस होता है जो स्क्रीन से स्लिट्स तक का होता है। सो कैपिटल एल कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कैपिटल डी कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सिंबल हो। ठीक है, फिर दो स्लिट्स के बीच के दरमियान का एक डिस्टेंस होता है। फिर यहाँ सामने जो आपके पास जो फ्रिंजेस बन रही होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी होता है, जिसको आप एक्स कह दो, चलो ठीक है। सो एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा, अगर एल ओवर स्मॉल डी ओवर ए, स्मॉल ए भी कह सकते हो, स्मॉल डी, कुछ लोग इसको ए कहते हैं, कुछ लोग इसको स्मॉल डी भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ मतलब मिक्स्ड इस तरह से हो गए हैं ये सिंबल्स, के कुछ सिंबल्स ए लेवल्स में यूज होते हैं, कुछ सिंबल्स आपके इंटर में यूज होते हैं। ठीक है, तो लैम्डा एल ओवर ए आप चलो यूज कर लो। अब एक्स की वैल्यू बस फाइंड करनी है। एक्स क्या चीज है भाई? एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस। अब वो क्या 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 रहे हैं ये इधर देखें कि द इफ द स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स इज डबल, यानी ए की वैल्यू अगर हम डबल कर दें, ठीक है, ए को आप डबल 2 टाइम्स कर दो, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन इज रिड्यूस टू वन हाफ, स्क्रीन से का जो डिस्टेंस है, यानी ये एल जो है इसको एल अपॉन 2 कर दो, spacing between two adjacent bright fringes will be dash,
यानी एक्स की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब एल को देखें तो एल बिल्कुल न्यूमिनेटर में है। ठीक है, अगर ये एल अपॉन टू हो जाएगा तो वो टू भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, एल अपॉन टू का ये मतलब है ना कि वो टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ए को अगर आप डबल कर रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो इसको ये डबल हो जाएगा। तो टू टाइम्स टू जो है वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा। फोर कैसे, अच्छा फोर, ये फोर टाइम्स नहीं हुआ है, ये फोर डिनोमिनेटर में फोर टाइम्स हुआ है, तो यानी कि वन फोर्थ हो जाएगा। सो एक्स इज एक्चुअली गोना बिकम वन फोर्थ ऑफ द ओरिजिनल एक्स, इसको एक्स प्राइम कह देता है। तो रिड्यूस टू वन क्वार्टर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, 100 के बाद 101, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन एट अ हाइट ऑफ 5 meters. If it is released, what will be its velocity at the bottom of the inclined plane? Now you've got an inclined plane question. अच्छा, ऊपर आपके पास एक सरफेस है, फिर इंक्लाइंड प्लेन आ गया, फिर बॉटम सरफेस आ गया। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के एक्चुअली एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस पे आपने वो ने उतना गौर करना है। पहली बात तो ये फ्रिक्शनलेस है, तो इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी। हाइट उसकी दे दी आपको 5 meters, तो हाइट भी आप 5 meters बना लें यहाँ पर। इफ इट इज रिलीज व्हेन इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, ओके ठीक है, बस ये आपकी ऑब्जेक्ट है, इसको आपने फेंका यहाँ से। अब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर हाइट क्या होगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज गोना बी हाउ मच। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन दो तीन तरीकों से लोग करते हैं, तो हम देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं इसे। ठीक है, पहली बात तो ये है, हम एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते हैं ये आराम से। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये इस हाइट पर है, तो लाजमी बात है, और ये स्टेशनरी था उस वक्त, तो लाजमी बात है इसमें क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पर हाइट पे टॉप पे जो है ये बिल्कुल, जब ये टॉप पे था तो और इट इज प्लेस मतलब इट इज स्टेशनरी, यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द हाइट। Once it starts rolling down and it just reaches at the bottom over here, during this process, as the height decreases, what will happen to its velocity? Initially, which was zero, it will start increasing, right? The velocity will start increasing, and just before hitting the ground, it's going to reach its max, its peak value. So we can say that loss of potential energy, a loss of gravitational potential energy, is equal to the gain in kinetic energy, right? मतलब change in potential energy equals change in kinetic energy. That's the thing that you can write. अब gravitational potential energy का formula क्या है, mgh, और kinetic energy का formula क्या है, हाफ mv स्क्वायर। करेक्ट, क्यों कह रहे हैं हम ऐसे, क्योंकि ये भी माइनस जीरो हो जाएगा, ये भी माइनस जीरो हो जाएगा। अब इनमें से एक क्वांटिटी तो फौरन से कैंसिल हो जाएगी, मास, बची सिर्फ वेलोसिटी। तो यहां से फॉर्मूला बना v इज इक्वल्स टू टू जी एच, और क्योंकि ये वी स्क्वायर वहां चला गया तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो ये तो आपके काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला बन गया, अंडर रूट टू जी एच। यस, काइनेमेटिक्स वाला जो ये वाला फॉर्मूला है अंडर रूट टू जी एच वाला, ये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके पास बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ज्यादा आसान यही होगा, अंडर रूट टू जी एच से आप निकाल लें, टू टाइम्स टेन कर दें, मल्टीप्लाइड बाई फाइव कर दें, तो फाइव टू टेन हो जाएगा, टेन टाइम्स टेन इज हंड्रेड, हंड्रेड का स्क्वायर रूट हो जाता है टेन। सो टेन शुड बी योर आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। A cricketer hits 4 runs when middle of the bat hits the ball. This is an example of Newton's which law? 4 runs कैसे किए भाई इन्होंने, आपके पास एक बैट है, बैट बॉल वाली एग्जांपल आपके पास बुक में दी हुई होगी। ठीक है, इम्पैक्ट जब होता है तो आपके पास 4 रन या 6 रन कैसे लगते हैं। बेसिकली इम्पैक्ट, ये बैट क्या करता है, बैट अप्लाइज सम फोर्स ऑन द बॉल एंड द बॉल आल्सो अप्लाइज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द बैट। ठीक है, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है, तो बैट जो होता है वो क्रिकेटर बैट्समैन के बैट में हैंड में ही पीछे की तरफ पुश हो जाता है, उसमें पुश लगता है। ठीक है, द पुश दैट इज exerted बाय द बॉल, एंड द बॉल ऑब्वियसली goes out of the boundary, it gets caught, in this case it's 4 runs।
Okay, now this question is missing. Let's just move on. The object at equilibrium may have any what? Force acting upon it at equilibrium. The force is, sorry, the force is zero. If force is zero, acceleration has to be zero. Why? Because force is equals to ma. Force is directly proportional to acceleration. If this is zero, this has to be zero. Torque has to be zero because equilibrium means you are talking about the two types of equilibrium. You are talking about the translational equilibrium as well as rotational equilibrium. And for rotational equilibrium, the net torque has to be zero. So finally, velocity can be any, but it has to be constant velocity, meaning it has to be uniform motion, no acceleration involved. Velocity has to stay constant. Let's move on. A guy is standing in a lift, falling freely under gravity, releases a ball from hand. As seen by the ball, the boy falls down, remains stationary, goes up, or none of the above. What would happen to the ball? Boy. Remember one thing, guys. Remember one thing. The person who's standing in the lift is falling freely under the effects of gravity, meaning he's in a free fall motion. Free fall motion. In free fall motion, there's a phenomena called weightlessness that is experienced by the person. And then the ball that is released. So what happens if you are observing the person from the ball? Well, पहली बात तो ये है कि nothing will happen. The reason is because the ball is also traveling at the same speed as the person himself. So if the ball and the person are traveling at the same speed, they will have a relative speed of zero. Okay, there will be no relative motion, and hence both of them, even the ball would appear stationary. Both of them would remain stationary. Okay. बट मतलब एक दूसरे को ऐसा लग रहा होगा कि स्टेशनरी है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, दोनों ही सेम स्पीड से नीचे जा रहे होंगे। चले, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आपकी लिफ्ट फ्री फॉल मोशन में होगी, ठीक है ना। Wheatstone bridge is used to determine the current, compare the resistance, determine the charge, determine the EMF। जी भाई, Wheatstone bridge में क्या होते हैं, चार resistors होते हैं, R1 R2 R3 R4। तो compare resistance। lower fixed point Celsius scale is, सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट कौन सा है, जहां से वो शुरू होता है, 0 डिग्रीज। सही है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गॉस, चलो ये तो सही नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा, लेकिन गॉसेस लॉ के मुताबिक टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये आप टेक्स्ट बुक में ही इसका आंसर गिवन है, ठीक है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आपके पास एक, बस ये याद रखता है, दिस इज जस्ट रखता कि बुक देख लें, बुक में जो फॉर्मूला गिवन है कि दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो बस वो वैल्यू याद कर लें। A fuse can be savior against high current, ठीक है, because it just breaks off the circuit, right? The current is not no flowing anymore. A current of Z ampere is passing through an inductor of 2, okay, energy stored by it is, ये वाला skip कर लेते हैं, energy stored in an inductor वाले क्वेश्चन नहीं करा हुआ। वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम को कहते हैं बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, अगर टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन है तो ये यंग्स मॉड्यूलस है, वॉल्यूम है तो बल्क मॉड्यूलस है, और अगर शेप चेंज हो रही तो शेयर मॉड्यूलस है। हाइपर मॉड्यूलस हमारे सिलेबस में नहीं है। देन a factor buys 100 kg of radioactive chemical with a half-life of 5 years, which decays to a stable compound. How much of the chemical will be radioactive in 10 years of time? Okay, so if you have 100 kg radioactive material, half-life of 5 years. So after 5 years, it's going to become
half of its original value, meaning it's going to become 50 kg radioactive only. And after another 5 years, it's going to become 25 kg radioactive. 25 kg is going to be the one that will be left radioactive after two halves, right? 5 years and 5 years. 5 years plus 5 years makes a total of 10 years. Moving on. Alpha, beta, and gamma radiations are emitted from a radioactive substance. And how are they emitted when they are heated? Well, not necessarily. When subjected to high pressure, no. When interacts with another particle, not always. Spontaneously, yes, that is correct. Radioactivity is a spontaneous process, meaning can occur at any time without any prediction. Change in entropy depends upon amount of heat added. It says entropy बढ़ती है. Amount of heat rejected कम होती है. Temperature से भी बढ़ती है. Amount of substance से नहीं बढ़ती. Frictionless heat engine can be 100% efficient if the temperature of the sink is 0 Kelvin. 0 Kelvin, not degree Kelvin. 0 Kelvin. ठीक है, degree हटा दो. A body moving with velocity v can be stopped by a force F in direction of it. Same body moving with a velocity of 5v can be stopped by a force 5F in the distance equal to. Okay. अगर velocity v है, force F है. अगर यही body आपकी 5v हो जाए तो distance क्या होगा? I guess the wording of this question is a bit vague, but let's see what they're trying to say. This is your body, okay, moving with a certain velocity v, can be stopped by a force F. Okay, while stopping it, there must be a distance covered, which is known as x. Okay, fine, fair enough. If this is the same body, but now it's instead of traveling with the same speed of v, it's traveling with the speed of 5v, and we are using a force of 5F. And what would happen to this distance is the question. Okay. So remember one thing, while the body was coming, it had a certain kinetic energy, right? Half mv squared. That was the kinetic energy. This kinetic energy has to convert into negative work, which is force multiplied by displacement. So half mv squared was equal to fx, and that's how we got the value of x. Okay, just rearrange this equation. So x is gonna become mv squared over 2f. ठीक है. अब next part में वो कह रहे हैं, okay, if the f becomes 5 times and velocity also becomes 5 times, what will happen to the value of x? So just look at this equation. This x is proportional to v squared, velocity squared, so velocity squared times. So if you increase the velocity 5 times, it's going to become squared. Divided by the force is also increased 5 times, so नीचे force तो f ही है. So 5 से ये 5 square cancel हो जाएगा, सिर्फ 5 times बचेगा. So it's going to increase 5 times of x. It's going to become 5 times of x. ठीक है. और ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है, ये इसलिए बनाई है क्योंकि ये सारी काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. Let's move on. One wheel has a diameter of 30 inches and a second wheel has a diameter of 20 inches. Okay, so this is 30 inches and there's another one with 20 inches. The first wheel travels a certain distance revolution into 40 revolutions. Okay, and how many revolutions did the second wheel travel the same distance? Okay, now this is not a difficult question, but it's still a tricky question. ठीक है. 240 revolutions का first wheel ने इस वाले distance travel किया. So distance x. 240 revolutions. तो इसका क्या मतलब हुआ कि कितना डिस्टेंस है, फाइंड आउट कर ले. फर्स्ट वाले का सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं. सर्कमफ्रेंस होता है पाई डी, यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाई डी, तो 30 पाई कह देते हैं इसे. सही है. अब 240 टाइम्स को 30 पाई करोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. डिस्टेंस इज इक्वल टू 240 टाइम्स 30 पाई, क्योंकि एक सर्कमफ्रेंस एक रेवोल्यूशन के बराबर होता है.
ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया आपके पास। अब इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आगे ही ले जाते हैं। इसका सर्कमफ्रेंस भी होगा पाई डी, राइट, पाई मल्टीप्लाई बाई 20। अब just to find out how many revolutions did this one travel, सही है, द सेम डिस्टेंस की इक्वल कर लेते हैं। तो हाउ मेनी को हम कह देते हैं x, इसको y कह देते हैं, यानी कि दिस सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय y must equal the previous distance. So if this circumference multiplied by y must equal the previous distance, then y is equal to 240 into 30 pi divided by 20 pi. Pi से pi cancel, 0 से 0 cancel, और 2 से 1, 240 से 120 हो गया। 120 times 3 is 360. So 360 revolutions were required for the second ball to move. Dark plastic handlers often used on kitchen utensils because the plastic is a good insulator. Plastic handlers, plastic is a good insulator, not a conductor, not good in radiation. So if it softens, that's not a good thing. So that's not a property because of which we apply plastics on the kitchen handlers. Okay. A parallel plate capacitor is the capacitance of, see, the distance between the plates and the both half distance between the plates and the area. I guess they're talking about the area are both half. Now the capacitance will be, now capacitance design formula is capacitance is equal to epsilon naught A over D. That's the formula of a capacitor. Okay. So the distance between the plates and the area are both halved. The distance, if the area is halved, okay, the distance between the plates is also halved. Then what happens? दोनों ही half हो गए थे तो cancel हो जाएगा, no impact at all. So yeah, it's gonna stay the same. C ही हो गया इसका आंसर. Okay, the capacitance is still gonna be the same, the C capacitance. Which of the following statement is true about energy in a quantum? So energy in a quantum जो है E is equals to hf से आप निकाल लें. This is the energy of a quantum. Energy is proportional to the frequency of the wave of the quantum. So it varies directly with frequency, and that's the answer. And we are done. So we've completed the physics section of 2017 paper NUMS. Okay, guys, so that's it for this video. We will continue with 2016's paper in the next class, inshallah. All the very best. Allah.